Hello everyone, welcome. This is JEE Main 2020 PYQ. Shown in the figure is a hollow ice cream cone. It is open at the top. If its mass is m, radius of its top is r and height is h, then its moment of inertia about its axis is, we have given 4 options. So, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आइसक्रीम कोन है जिसका मास m है, रेडियस उसके टॉप का r है, उसका हाइट h है एंड इट इज़ ओपन एट द टॉप और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ कोन. भाई इस आइसक्रीम कोन का रेडियस है r, मास है m, हाइट है h, दिस इज इट्स एक्सिस. सपोज उसका स्लैंट हाइट जो है वो है कैपिटल L. सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी L इज इक्वल टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. Mass of this ice cream cone is given m. Now curved surface area of this cone will be, curved surface area will be equal to pi r L, and L is equal to root under r square plus h square. So we can write over here pi r रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इस कोन का मास m है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है. सो वी कैन कैलकुलेट मास पर यूनिट एरिया ऑफ आइसक्रीम कोन will be equal to m by pi r root under r square plus h square. Now, let us consider a small circular element which is of the circular element is of thickness dl and the radius of this small circular element is small r. Let us consider this small circular element and the length, the slant height of this small cone which is formed when we are considering this small circular element of radius small r, उसको हम लोग small l मान लेते हैं. Then area of, first of all let's write, consider a small circular element of radius small r and thickness dl. Then area of this small circular element will be equal to, इसका लेंथ होगा 2 pi r और then thickness is dl. So area of this small circular element will be 2 pi r dl. This means अगर हम लोग को इस स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट का मास निकालना है, अगर उसको हम लोग dm से रिप्रेजेंट करें, देन dm विल बी इक्वल टू m बाई पाई r रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विच इज मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ दिस स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट 2 pi r dl. So by solving this we can calculate mass of this small circular element. Here dm represents mass of small circular element. Also, if we compare this bigger cone of radius r, capital R, and this small cone of radius small r, we can write, this is equation 1. Now we can write small r by small l. This small l is representing the slant height of this smaller cone
is equal to capital R by capital L. Capital L is representing the slant height of the bigger cone of radius capital R. Also, capital L is equal to root under R square plus H square. So, we will put this value. Capital R is equal to root under R square plus H square. यहाँ से हम लोग स्मॉल r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R निकाल सकते हैं. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L by root under R square plus H square. So, we can put this value of small r in this equation 1. Now, this is equation 2 and we can put this value in this equation 1. And finally, dm will be equal to m by r root under R square plus H square into 2 into m by this pi and pi will get cut. So, m by r root under R square plus H square into 2 r के प्लेस जगह पर हम लोग ये लिखेंगे आर एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड देन डी एल. सो आर एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू डी एल. Finally, dm will become this r and r will get cut. Finally, we have 2m l dl by r square plus h square. This is the value of dm. Now, we can calculate moment of inertia of the small circular element जो हम लोग ने कंसिडर किया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस अगर हम लोग को निकालना है, अगर उसको हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट करें तो वो होगा आर स्क्वायर इंटू डी एम. आर जो है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो उस स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, एंड डी एम इज रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ दिस दैट स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट. सो आर स्क्वायर डी एम से हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकाल सकते हैं. आर स्क्वायर हम आर का वैल्यू है आर एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो पुटिंग इट्स वैल्यू it will be r square capital R square L square by r square plus h square into, in place of dm we will write this value 2ml dl by r square plus h square. So finally, this di, the moment of inertia of the small circular element, will be equal to r square 2 r square m, this L square and L square will become L cube dl by r square plus h square the whole square. So this di is representing the moment of inertia of this small circular element which we have considered about the axis. If we integrate this di within the limits 0 to capital L, then we can calculate the moment of inertia of this ice cream cone. So, finally, moment of inertia of given ice cream cone about its axis, if we represent that by I, will be equal to integration of di within limits 0 to capital L. So, putting its value, we will put the value of this di and we will integrate it within the limits 0 to L. So, we have 2 integration 0 to L 2m r square L cube dl by r square plus h square का whole square. Now, L is equal to root under r square plus h square. So, this means r square plus h square will be equal to L to the power 4. So, in place of this r square h square ka whole square, we can write L to the power 4. And we have 2m r square by L to the power 4 integration 0 to L L cube dl. Now, integration of L cube dl within limit 0 to L will be equal to L to the power 4 by 4
putting it this value over here, we will get I is equal to 2m r square by L to the power 4 into L to the power 4 by 4. These two will get cut. And finally, the value of moment of inertia of the given ice cream cone will be equal to half m r square. So this means option A given in the question is correct. Thank you.